Student, uh, I hope you all are well and be cool and calm. No need to come in excitation because examination is so near. Therefore, I want to tell you it is better to whatever you have studied, revise it. No need to watch any new things. Okay, so let us come and we see the some strategy. So your exam is suppose tomorrow. Then what you have to do from this evening? I am going to strategy here. Okay, right here. So strategy for the JEE advanced examination at the evening of night before the examination. So suppose tomorrow is exam, then what we have to do today? First of all, we take the proper revision. Whatever you have done with concentration, already we have command. So we revise it, the basic core concept, the basic application, even some problem, whatever you have crossed through, but very, very tricky, you watch it. And what is the symmetry, what is the something, suppose you have to derive any kind of things, so there is no information, but how you symmetry them and you get it, whatever you have done, you only watch that things now, because at least you cemented over that. Where's your possibility to gain the maximum number? It's okay. First. Second, you have to eat whatever you have eat in daily routine previous month or week. No need to eat some new things which may be unfavorable to your health at that night. And then it is mandatory to you to take the proper sleep, at least 6 to 8 hours, whatever be possible to you. And take early sleep, at least whatever be your habit, you change it for this night and take sleep at early and get up in morning. Okay, so this is the evening strategy what we have to do. तो बच्चे, मैंने ये बताया कि आपको किस तरह से शाम का प्लान करना है। तो शाम में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको रिवीजन वही चीज करना है। ये देखो, एट द इवनिंग और नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन आप रिवीजन करना है। आप क्या खाएंगे, आप वही खाइए जो आप पिछले सप्ताह से खा रहे हैं। आप कैसे सोएंगे, तो सवेरे सोइए और एटलीस्ट आप 6, 7, 8 घंटा सोइए, बढ़िया से सोएं, अच्छा से प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, जो भी है जैसे आप सो रहे हैं, लेकिन नींद होनी चाहिए पूरा, क्योंकि वहां थोड़ा दिमाग का यूज होगा। और ज्यादा नया चीज पढ़िए मत, नहीं भी कुछ पढ़े हैं तो एक्साइटेशन में नहीं आइए, क्योंकि अब एक्साइटेशन माने से कुछ होगा नहीं। आप जानते हो ये साल 2 साल का मेहनत है और एक दिन में तो कोई बदल नहीं सकता है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद बच्चे, after that we discuss the morning routine. Morning morning get up, morning get up to exam center. When we get up in morning and then up to the exam center, what should be our strategy? Then first of all, you prepared yourself, that is the pressing, washing, whatever be it is the natural things, and take the proper bath and with the freshness, whatever be. So you have to fresh theirs. After that, you watch what you have to carry. Don't forget whatever you have to carry. Suppose you arrange just after press admit card, mask, hand sanitizer, and then whatever be guideline, and they told like this, so you carry these all things. And nothing you should carry what is most prohibited during the examination, just like electronic gadget and whatever anything. Okay, so this you have to carry. And then first admit card, mask, and hand sanitizer. This is the three important to you. And then one transparent water bottle you can carry, because 3 hours examination be there. After sometimes you take little bit water which keep you moisturize and your mind function well. It is okay. So these things. After that, it is your room plan, carry, then travel. You should travel before early, because you have to reach before the examination. You shouldn't be panic in the way, oh my god, time is so short, convenience is not available, like that. So you may be panic there, and this may disturb your mental balance. Therefore, no need to panic. You reach at proper time, and therefore you have to decide when you have to travel. So it is better to travel before, and at least you
reach there, whatever we mentioned before that time also. At the examination center, then you reach at the examination center, there is the board where the roll number, everything, your class, your building number, where you have to sit, in which lab you have to sit it, we mentioned there. You watch there and write somewhere else, and you go see your seat or the what your system, and then not system before, yeah, system you sit. After that, it is necessary that you come out and watch the washroom. Where is the washroom, fresh room? Suppose during that period, if you need such kind of things, you shouldn't invest your time and go there directly. So watch the washroom. Even before examination, it is mandatory or advisable to take the fresh whatever you feel, and then you sit to write the examination. It's okay. And then this is the time. So this is the our time. जैसे कि हम देख लिया कि मॉर्निंग में जब से हम उठते हैं तब से एग्जाम सेंटर तक क्या क्या करना है। तो आप फ्रेश होइए, योगा करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो आप वो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, सही रहेगा। मेडिटेशन कर लीजिए, ज्यादा स्ट्रेस मत डालिए। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड लेना है, हैंड सैनिटाइजर लेना है, और मास्क बहुत जरूरी है, ये लेना है, ये सब ले करके जाना है प्रॉपर। और उसके बाद जो है आप ट्रांसपेरेंट जो आर पार दिखता है बोतल, उसमें आप पानी भी लेके जा सकते हैं। 3 घंटा का एग्जाम होता है, वहां पे आपको काम आ जाएगा। फिर आप प्रॉपर टाइम घर से बाहर निकालिए। कौन ट्रेवलिंग आप व्हीकल्स यूज करते हैं, अपने से जाते हैं या कहीं और शहर में जाते हैं, और प्रॉपर टाइम पे पहुंचना है, उसमें भी आपकी परेशानी होगी। जब आप ट्रेवल करें तो आप जो कैरी बैग है या जिसमें आप एडमिट कार्ड वगैरह है, पॉकेट वॉकेट को संभाल कर रखे हैं, तो कभी कभी पॉकेट से भी कुछ चीज गिर जाता है, बैग से खो जाता है, रास्ते में भी खो जाता है। पता चला अरे मैं बैठ के आ गया, रास्ते में बैग छूट गया। उसका भी प्रॉपर पकड़ के रखें, बढ़िया से ग्रिप उरिप ढंग के ये रखें। उसके बाद जब एग्जाम सेंटर पे जाएं तो वहां पे बोर्ड लगा होता है, उसमें आप अपना देखो सारा रोल नंबर कहाँ है, क्या है, कैसे है, प्रॉपर तरीका से रूम देखो, अपना लैब देखो, जहां भी कंप्यूटर रखा होगा वो सिस्टम वगैरह, वो सब देखने के बाद ये जरूरी है कि वहां के जो वॉशरूम होगा, जो लेबोरेटरी होगा, आप जो टॉयलेट वगैरह होगा, सबको वॉच करके आप देखो। और वहां जाकर के पता करो ये कहाँ है, कैसे है। एग्जाम से पहले आप फ्रेश हो लें तो ये काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल टू यू। आप एग्जाम के टाइम में व्हाट यू शुड फॉलो, फर्स्ट यू गेट द पेपर, आफ्टर दैट यू रीड द इंस्ट्रक्शन thoroughly with keenly. Okay, watch very carefully whatever be given here, which kind of pattern change, because it may be change, no need to come as a previous year. So you have to watch how many question, how many numbers we increase or decrease, whatever be. So you have to watch theirs. Negative marking, how much negative marking, in which portion negative, especially the numerical valued problem or fill in the blank problem has no negative marking. So it is advisable to attempt these all questions as far as possible, means attempt whatever be, it's okay. After that, MCQ, and MCQ two types, a single correct answer and multiple correct answer. As you mentioned, they are written here. For that you get the negative marking. Okay, so you read for the single, especially -1 negative marking. If you make the correct, you will awarded 3 marks. For multiple questions, suppose the 4 option there, 4 is correct. If you correct the 4, you get the 4 marks. You correct the 3, you get 3 marks. You correct the 2, you get 2 marks. You correct the 1, tick 1, you get 1 mark if 4 is correct. Okay, and so it is the things. And if there are no correct, sometimes it is given -1 negative marking, -2 negative marking. You have to watch it in your paper, in instruction. Okay, so accordingly you have to follow the further step. Okay, whatever be. So like this, first, second, what we see the numeric system, and after that the numerical value, two kind of, in first paper numerical value with the digit, after decimal you have to put 2 digit. In second paper, or maybe it first paper, maybe interchange, only 1 digit you have to put 0 to 9. So there are two kind. In 0 to 9, -1 negative marking, numerical, sorry, no negative marking in this. But in second paper we see there is a multiple, where both are same, multiple MCQ there also,
both are same, a single MCQ there, and there is a numerical entry, fill in the blank. So in that case we see in many times that single digit entry there in the fill in the blank. In the first paper double digit, maybe double digit there, it may be interchange and maybe same, whatever way, you have to watch yourself keenly. After that we move the next, then what we have to follow. So this is the things, okay. How many, how you have to attempt the, how you have to instruct yourself. After that the time is the these things already you have to read in instruction. When you study the read instruction before, everything's be mentioned there. There are 3 sections like this, these all already mentioned, or you already crosses through that. After that you are entering the examination. In spite all, it is advisable to watch keenly, quickly the whatever be instruction written in the question paper, okay. Like this. After that, time management, according to me, it may be vary according to your personal choice, whatever your habit. You already wrote many test series, test papers. So whatever your proper strategy, first you follow that. Suppose in case many students have not experienced, they belong from the rural area, and even not then they are unable to manage. Therefore I divide the time into 3 rounds. First round, you know, there are the 3 layer of question asked in the examination paper, mostly any kind of examination. First is the easy, second the moderate, and third is the very very tough or toughest examination, difficult question be there. Nothing is difficult, but difficult it's okay. So the first round you have to take only 40 minutes. Second round moderate, the maximum number of question available there is a moderate, that is neither easy nor tough, in the medium. Therefore maximum time we provided for that. So the first round you have, first round you have to 40 minutes. Second round you have to take how much, 80 minutes, because 20 minutes added with 1 hour, 80 minutes. And third round is the 60 minutes, 3 hours question, 180 seconds in your hand. So whenever you do it, 1 hour, 2 hour, 3 hour, so it's completed like this. And this is the very very difficult side, the third round, whatever be. So you try to divide it like this, and because in this way at least you give the boost up yourself that you able to solve, because just question make you confident. And after that, on the behalf of these all questions, you move ahead and able to attend these all. And I want to advise you, because this is the question and there are no any straightforward question asked. Therefore it is a best way to break the question in part and then try to understand, and then you integrate, you will get the answer surely. So no question is very very tough, really. I realize whenever you break down the question into piece, okay, and think about the piece, and then you integrate, you will get the answer. It is the strategy for that. After that, how many question attempt, sometimes the what you have to do, there is a 4 option there. So elimination, suppose if something is wrong there, so it is not especially in your elimination is work especially for the higher, but you can do it. This is not for you. Elimination method is there when the multiple question is selected. If some question be given, there is no question till this time we ask, but in suppose there are the 4 uh, formula answer these, so option ABC given, which of above is the correct, 1 2 2 3 like this. So if one is wrong, so you eliminate there, but such kind of question not seen till this time in your paper, therefore it is not for you. Our elimination method, whatever we left it, don't left any question. It is advisable if you know, so at least don't left those questions which don't carry the any negative marking, just like a numerical value input or fill in the blanks. So you have to do it quickly, okay. After that, this is the examination. During the examination strategy, we divide the time into 3 rounds. After that, you have to attempt the easiest question, then moderate, then toughest, as I mentioned. Then no need to left any question which had no negative marking. मैंने ये एग्जाम के ड्यूरिंग में बता दिया कि बच्चे जब आप एग्जाम में होते हो, है कि नहीं, तो जब एग्जाम के अंदर जाते हो तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ो, क्वेश्चन में दिया रहता है किसमें निगेटिव है, नहीं है, कितना है, ये सब देख लो। फिर फर्स्ट राउंड में 40 मिनट है, जो इजी वाला क्वेश्चन तुमको आ रहा होगा वो क्वेश्चन करो। सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करो जो न तो इजी है ना तो ज्यादा टफ है, बीच बीच में लग रहा होगा, देखने से पता चल जाएगा मॉडरेट है। 80 मिनट उसको टाइम दे दो, चूंकि ज्यादा यही क्वेश्चन होता है। और जो थर्ड राउंड हमने 1 घंटा का रखा है 60 मिनट का, उसमें बहुत टफ क्वेश्चन होगा, जो लगेगा कि अरे ये तो देखा भी नहीं था, या जैसे भी होगा,
तो उसको भी आप इस ढंग से तोड़ तोड़ करके वैसे क्वेश्चन को टुकड़े टुकड़े में करके और जल्दी से दिमाग लगा कर सोचने की कोशिश करो, फिर सबको इंटीग्रेट करो, तो वहां से ये मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन यदि ऐसे इलिमिनेशन में होता है कि एक ही ऑप्शन में ऊपर के 2-4 दिया रहता है तो एक भी गलत रहता है तो ऑप्शन को छोड़ देते हैं, तो ये यहाँ पे आपके लिए नहीं है, अभी तक तो देखा नहीं हूँ। तो ये डोंट लेफ्ट एनी क्वेश्चन। सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा है जो निगेटिव मार्किंग नहीं कैरी करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी है इस तरह का, तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे कि ये सारे जो है आप जो है सो उसको अटेंड कर लोगे और ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट पेपर देन द फोर्थ स्ट्रेटेजी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस इज द फोर्थ। आफ्टर द फर्स्ट पेपर व्हाट, when your first paper is complete, then what you have to do, then paper discussion. Never, don't discuss any kind of paper or any kind of questions with your friend, your or family members. Even you don't see what you have to done, no need to, because they give you worry or excitation, doesn't matter is that you have to prepare yourself for the second paper, so no need to discussion. Okay, lunch, you take the light lunch or light something, whatever be available there, and this is things. After that, rest and sleep. Suppose you are single at the center and you go away from your home to far away, so no need to take sleep as a rest. Suppose you got sleep, then who will alert you? No one there. When sometimes alarm is not proper working, it may be problem to you. So never sleep, always be in excitation, or always be in the joy mode, and in the sitting position or walking position, whatever be. So don't sleep, as I think. So this is the things. After this, after the paper, no need to revise, no need to see any new things or the old things, no need to revise. Whatever be at your hand, be fresh, because 3 hours you already suffered your mind. तो मैं ये कह रहा था कि जब एग्जाम आपके हो जाए तो कोई पेपर डिस्कशन नहीं करो, हल्का लंच कर लो, सोना नहीं, आप घूमो, थोड़ा सा बैठो या बात करो किसी से, या कोई और टॉपिक पे बात करो। रिवीजन भी जरूरत नहीं है, जो साल 2 साल नहीं किया वो अभी क्या कर लोगे, और वो दिमाग में और बढ़ जाएगा, और जो सोच पाओगे वो भी नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन फिवीजन डिगरा पिगरा छोड़ दो, ऐसे भी नहीं होना तो ऐसे भी नहीं होना, छोड़ ही दो। तो बैठ के मस्ती करो, फिर दिमाग लगाओ वहां पे, तब जाओगे तो अच्छा से काम करेगा, ये है। अब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ सेकंड पेपर के टाइम में ही यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, आपको 3 स्लॉट में बांट लेना है, और इसी तरह से जो यू हैव टू, दिस इज द फर्स्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन, our strategy during the examination of second paper time management is like that. In first round you take the 40-minute, second round you take 80-minute, third round this is the for easiest to you, this is the moderate to you, this is the hardest to you, and a difficult question to you. After that, don't leave also those questions who are available there, the numerical input, or fill in the blanks. So this is the mandatory. But whenever the negative marking come, if you are not confident, then no need to do it, left it, because it reduce your answer. And it may be possible, because negative marking is only -1, and you are confident if 2 option is not okay, only 2 option, that elimination work there. Suppose 4 option be there and 2 option is not okay, 2 option you are confusion, so probability that 50% may be right, so you do it whatever be possible. So elimination method also work there, because 4 option, but 2 option is totally irrelevant, they are no related with that. If yes, then you able to choose out. Then if you are smart and you already have it to do, then you do it by the elimination method. Otherwise, whatever your general academic procedure, technical procedure, logical procedure, you follow that. तो मैं ये कह रहा था सेकंड पेपर के ड्यूरिंग में यही 3 पार्ट में बांट लियो, इसे 40 मिनट कर दियो, इसे 80 मिनट, और इसे 60 मिनट कर दियो, और ये मॉडरेट है बीच बीच का, और ये इस तरह से ये सारे करोगे, हो जाएगा। मान लो 4 ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन लगता है अरे ये तो होगा ही नहीं, फालतू दे रखा है, हो कि नहीं, तो उसको भी छोड़ देना, 2 छोड़ देना, 2 ऑप्शन तुम्हारे हाथ में, उसमें से एक सही होगा तो थोड़ा सा तो रिस्क कम हो गया ना गलत होने का, तो वहां पे 50% का बहुत चांस बनता है, तो मार दियो, ऐसे में लगता है ठीक ठाक है। अगर नहीं ज्यादा बनाया होगा तो, अगर लगता है मैं कुछ किया ही नहीं, तो ऐसे में सहारा भी बन सकता है, वैसे अगर उसके आसपास हो। बाय द वे, अगर क्वेश्चन मान लो उठा लिया और बन नहीं रहा है, आंसर आ नहीं रहा है, तो 1 मिनट से ज्यादा, 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम मत दो, तुरंत छोड़ के भागो दूसरे पे। 18 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, काफी क्वेश्चन है, सबको करना है, और ऐसा नहीं
कि नहीं बन रहा है तो एकदम ला रहे हैं, प्रतिष्ठा पे पानी फिर रहा है, लाएगा कैसे, नहीं पढ़ लिया हूँ रात में, कल में, टीचर में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, बाद में अटेम्प्ट करना, टाइम मिलेगा तो और क्वेश्चन कर लो। यही आज का स्ट्रेटेजी है। और बच्चे, मैं आई विश यू दैट यू विल सक्सेस। एंड आफ्टर दैट मैं कुछ और भी एडवांस रिलेटेड अब तो डालूंगा, तो वो सब देखते रहना। मेरे एक एक ट्रिकियल क्वेश्चन आते हैं, जिस क्वेश्चन करने से सिर्फ तुम सीखोगे ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म देगा कि औरों को कैसे करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बी पॉजिटिव एंड गो बिफोर द एग्जामिनेशन व्हाट एवर बी मेंशन। और समय से पहले जाओ वहां एग्जाम पे, बस बिंदास होके एग्जाम दो, कोई टेंशन नहीं लेना है, होगा नहीं होगा, टॉप करें, 2 रैंक आए, 1 रैंक आए, 5 रैंक आए, कोई मतलब नहीं है, टेंशन नहीं लो, दो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, ज्यादा सोचो समझो नहीं, बस जो होगा वो देखा जाएगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू अगेन, गो विथ पॉजिटिव, थैंक यू।